है उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। एक और विषय, सिंपल टेक्निकल बात में जिक्र करना चाहती हूं। हाँ, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं, इस सरकार 2014 से लेकर आज तक वी हैव नॉट अलाउड इट टू गो टू डबल डिजिट्स। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले इट वॉज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 10, 11, 12, 13, इवन फूड प्रोडक्ट्स। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, आई थिंक हिज हियर, संजीव सन्याल, इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं। मैं संजीव से बोलूंगी आपको जरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ, सो इट विल हेल्प यू टू नो। थैंक यू। Number 260. Somanathan wants to. Okay. Yes. Just specifically on job. He's telling, oh yeah, I'll answer that also. Yeah, but specifically on jobs and specifically what is in the budget. So one is there is an additional 2 lakh crores of lending to MSMEs which is outside the ECLGS. So ECLGS is for those affected. It's an automatic program for existing borrowers. This is for new lending to MSMEs unconnected with ECLGS. 2 lakh crore of additional provision has been made in this budget. ECLGS has, as already mentioned, been expanded for the hospitality and related sectors. The outlay on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is up by 27%. And in addition to that, a provision is being made that in the capital expenditure support to state governments, if state governments have certain priority projects in PM Gram Sadak Yojana have been identified, we will even take the 40% state share on those components so that the states have no burden in carrying out these works. These are extremely labor intensive projects, and in addition, of course, there is a huge increase in capital expenditure. It has a very high employment effect. We have a new scheme for the Northeast, which is abbreviated as PM Divine, which is the PM's development initiative for the Northeast. This is a gap-filling scheme where if something doesn't fit in any existing scheme, Northeastern states can pose those projects to this fund, and this fund will give 100% funding for those projects. And they're livelihood-driven projects. In addition, we have the production-linked incentive schemes where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled out now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. हम बार बार देते आ रहे हैं। एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है। विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए
सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट for black money to be brought. And another thing, today the NPAs in the banks are coming down. Banks are getting the money back of those who have fled the country. Having taken the money of the banks and having gone out, वो पैसा जब वापस आ रही है वो भी in a way partly black money ही होता है जी, जिसका टैक्स नहीं भरा, बैंक को पैसा चीट करके चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे के पूरे वो ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक मनी है। 260 मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से। हाँ मैम, आपके लिए भी उधर से बहुत वैसे सवाल आ रहे थे। अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? आप दीजिए, मैं भी दूंगी। अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देती, ऐसे थोड़ी ना होती। आई विल गिव आंसर, डोंट वरी। जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where, what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उभर कर ऊपर आ रहे, स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना। I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं फिर बात करें, छत्तीसगढ़ में कर दिखाएं फिर बात करें। Almost irresponsible comments are coming as criticism. I'll take criticism, but not from somebody who has not done his homework. Thank you. 266 मैम अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। इनकम टैक्स रेजिम को लेकर के सवाल था। आपने बजट में घोषणा की थी न्यू टैक्स रेजिम की, और जो आंकड़े अभी तक आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने उत्साह उस नए रेजिम के लिए नहीं दिखाया। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आपने खुद जिक्र किया कि पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई है, कई जगह पर रोजगार की कमी हुई, भारत में भी उसका असर पड़ा है। तो जो मिडिल क्लास है वो एक राहत की उम्मीद कर रही थी कि कुछ राहत मिले इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर। हालांकि आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है?
नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बड़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव, देयर आर टाइम्स व्हेन इट विल हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर। सो आई एम सॉरी इट डिडंट हैपन, बट बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूं। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है। हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं। सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है। आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। सो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले। Number 9. हाँ, yes, we have been, actually, Tarun can say something more. There are two regimes, one in the corporate sector and one for the one that came last year. So on the corporate also, when the tax rate was reduced from 30 to 22%, a choice was given to the corporates to move to the 22% regime while taking no exemptions. So we have figures for 1920 financial year, which is the assessment year of 2021. 65% of the income has actually shifted to the lower tax regime. So basically a large number of people are shifting, people who are finding that they don't need exemptions or their exemptions are over, they are moving into that. Let me also mention to you that we have analyzed data for corporates. The average tax rate being given by corporates is about 22 odd percentage in that year, as against 27, 28, which they were giving when the regime was of 30%. So they got a lot of relief there. And for corporates which are showing profits of more than 500 crores, this taxation rate is close to 20%. So the taxation rate relief which you are talking about in the corporate sector is already there. As far as individuals and HUFs and the others are concerned, where a second option was given in the last year, since the date was extended for filing the returns, we'll be able to analyze the returns this year and know how many people have shifted. But my own anticipation or own analysis says that people with a little higher income, say 15 lakhs, 20 lakhs and above, should have shifted to the new regime, provided they were not taking benefits like housing loan benefits or they were not taking benefits like LTC. But we'll get to know exactly what has happened after we analyze this, and based on what analysis actually comes, will give us a pathway of what action or what steps we need to take in the future. Good afternoon, ma'am. Here downstairs. Sanjay Agarwal from PM News. Ma'am, today you just mentioned about the stock markets. So I was watching that when you announced about digital virtual currency. So that time the cryptocurrency, the stocks went up, and SBI, the largest, banker in India, the stocks went down. And you'd get on a very innovative budget despite you've given on postal services are going to go to the rural and they're going to get a lot of savings money. So what's the reason? Why is this reaction? Still down, or it went up at the end of the day? I think you have to ask the investors who are doing it, because I don't see any, I don't think we can answer for them as to why they think the digital currencies are not good for banks is a matter of speculation. What is the question on? It went up. Okay. So I think we should have taxed it even more. It would have gone up even more. Number 5.
Good evening, ma'am. This is Chetan from Business Today TV, India Today Group. Ma'am, fiscal deficit is pegged at 6.40%. Ma'am, what are the calculations and assumptions based for that number, considering the fact that the geopolitical tensions are rapidly changing and the global macros are also changing rapidly, especially for the crude and other related commodities. So, what is the bet on that number, ma'am? I'll ask Somanathan to give you details, but what do you think it should have been if it's not 6.4? Because you sounded very sure it's 6.4, but you know. It's a question, ma'am. Do you think what are the calculations behind and the assumptions behind that number, ma'am? All right. First of all, the assumption. Gets it to the T. It is 0.1% increase in fiscal deficit this time because why couldn't you get that? No, see, first let me answer him first. The calculations which underlie it are given in the budget at a glance document. So it is 6.4 based on our prediction of what the GDP will be and our estimates of revenue and expenditure. Now, somebody said your estimates of revenue are conservative. I think the Revenue Secretary has clarified that they're actually quite realistic. We think they're realistic, but when in doubt, we have chosen to do what we think is definitely likely to happen, rather than repeat the practice of having estimates which are not perhaps considered credible. So we've been tried to keep our estimates realistic based on the factors that you mentioned, that yes, there could be an upside. I mean, maybe revenues can grow more than 14%, but there are all the headwinds that you refer to. There's a federal taper, there's a possible oil price risk, which could all affect the economy. So we think the numbers we have here are likely to be achieved. It's the best estimate of what could be achieved. So I would say there's a very realistic projection of 6.4 as the percentage, given what is likely to happen to GDP, what is likely to happen on the revenue side, and what we have provided on the expenditure side. So they are estimates that they are the best estimates we can produce with a high degree of credibility of being achieved. And I said you had projected 6.8, not 6.9. Yeah, we are being transparent. It is likely to be 6.9. So we have not massaged it to 6.8. 107. मैम मैं नितिन हूँ लोकमत से। हाँ, आपने अभी बोला कि महाराष्ट्र में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिससे वो आत्महत्या रुक सके? दूसरा, आपने 80 लाख गरीबों के लिए मकान इस बजट में प्रावधान किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर घर के हर सर पे पक्की छत का वादा किया था, तो ये कब तक पूरा होने वाला है? So the targets for all of these programs have indeed been affected by the pandemic, like all targets in all countries. So barring the setback which occurred during the pandemic, the programs are on course. And if you exclude the delays and disruptions caused in the last 2 years by repeated waves of a pandemic which is not in government's control, broadly, they are on course to achieve the housing targets. किसानों के मामले में स्टेट्स का भी रोल है जी। जब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, महाराष्ट्र में सरकार जो कांग्रेस के विषय में बात हुआ, उस संदर्भ में मैं कही, एग्रीकल्चर इज स्टेट ऑल्सो डस इट्स बिजनेस। सो वो मालूम है जी, वो मालूम है, मगर जब हमारे ऊपर ही निशाना साधा करते हैं, जब हम लिस्ट करती हूं कि किसान के लिए हमने क्या 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 कदम उठाए, राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विषय में, उस संदर्भ में मैं पूछना चाहती थी। मैम, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से जो किसान की बात चली, तो एक छोटा सवाल ये है कि जो अन्य योजना जो शुरू की गई थी उसकी म्याद 31 मार्च को खत्म हो रही है। क्या सरकार बजट में, चूंकि इस पर कुछ कहा नहीं गया, तो क्या माना जाए 31 मार्च को खत्म हो जाए कि आगे बढ़ाने पर विचार होगा? और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सिर्फ सोलर पावर के लिए, सोलर पैनल के लिए हम लोगों ने इंक्रीज किया उसका आवंटन, चूंकि काफी एम्प्लॉयमेंट देता, आपने कहा भी, तो क्या आने वाले दिनों में और किसी सेक्टर पर विचार होने की संभावना माने? अभी ही शुरू हुआ है PLI और अच्छा रिस्पांस मिल रही है उसका। 14 सेक्टर्स का PLI है। अभी बढ़ाने के विषय में कुछ सोच नहीं है,
मगर जो अनाउंस हुआ है वो तो फुली इम्प्लीमेंट हो, उसके ऊपर ध्यान हम देंगे। अभी अनाउंस करने के लिए बजट में मैंने जो घोषणा की उतना ही है, उससे ज़्यादा मैं अभी बोलने का कुछ विषय नहीं है। 61. Ma'am, good evening. This is Santosh Thakur. Ma'am, how much you expect from 5G spectrum auctioning? Even if I can speculate on it, this will be the day to do it. I won't be able to do it. Number 42. Madam FM, this is Shrimi Chaudhary from Economic Times. I needed two clarity. One, on the virtual currency tax provision, whether it is prospective or going to be applicable from the next financial year. And second clarity I needed on the part of, the capping of the surcharge on the long-term capital gains payable on the capital asset at 15%. If you could elaborate a bit on that. The answer to your first question is 1st April. And the second part was... Surcharge. Yeah. The surcharge, we have brought in two provisions. One, the surcharge on companies is today 15%. But in some cases, in some contracts, there is a need for more than one company to come together to bid for that particular project as a consortium. So when they form a consortium, it is called association of persons. So the surcharge on them, depending on their income, goes up to 37%. So now that will also be capped at 15% as much as a company surcharge maximum is there. The second part today, the second part of your the surcharge is that the surcharge on listed shares on which STT is paid is today limited to 15%. On other capital gains also, we are now bringing it at par with this 15%, so it will be 15% for them. So this will be a big relief for the startup community. 53. Yeah, good evening, ma'am. Siddharth from Bloomberg. I just wanted to ask you a steep hike in capital expenditure and borrowing of 15 lakh crores. So are we safely assuming that private investment will not happen in the next financial year also? Safely assuming? Will not happen. Private investment will not happen in the next financial year. No, because I it is have the government mentioned, which is pushing the trigger. No, I've actually mentioned it in my speech that private investment will have to pick up and it will come. I used some words, I didn't use exactly what I'm saying now, but I did recognize that private investment, for them to come forward, it is very clear that the public investment will have to be increased, and we've increased with an expectation that they will also come forward. I'm being reminded by the CA that for private investment to be crowded in. Number 70. Ma'am, I'm Mukesh. I work for Newsrise. Just wanted to know about the size of the green bond, the currency it will be issued in, and who will be the users and how they'll use it. See, first of all, the green bonds are part of the overall borrowings of the central government. These are not additional, these are within that limit. Number two, they will be in the coming days specific sectors or the projects wherein this money will be used. Third, the expectation is that there are a set of investors who would like to put in money for projects which are green, which leads to less carbon consumption. So for that class of investor, this is the future. So we have to build that market. In that attempt, the first step will be taken in the year 22-23. At this point of time, it is in the domestic market
And we are in a conversation with Reserve Bank of India and with the market participants, and the size, etc., will be determined in the coming weeks. I just wanted to add, because I was watching some commentary, I just wanted to make it very clear. There is no connection between the size of our capital expenditure and the issuance or non-issuance of any green bond. So whatever the size of the green bond issue may be, this is the budget and this is the total amount of borrowing. It is part of this borrowing that may come as a green bond. It is not that the green bond is a requirement or a conditionality for this budget to be executed and for the capital expenditure to happen. I just wanted to clarify that. Yes, but it will be part of the total market borrowings which have been projected in this budget of 11,58,700. So it is not over and above that. And this 1158 is not dependent on the issuance of a green. They are two separate transactions which will happen, but they are within this limit. And there is no conditionality about if this green bond doesn't get issued, then the capital expenditure may not happen. No, there is no such linkage. Just 1 minute, madam. On the Shrimi's question on the taxation, I want to clarify, it is still taxable as of today. It is not that it will become taxable from 1st of April. So I just wanted to clarify that the message should not go that it is not taxable today and becomes taxable from 1st of April. It is taxable today, but a specific regime has been brought in by the FM, which will be applicable from 1st of April. So that is another question, so that we can answer when you come to my office. I'll explain to you in detail. Number 26. Just one clarification. There is a mention of effective capital expenditure of 10.68 lakh crore, and what I found out that it includes the expenditure, some of the expenditure towards NREGA also. So just want to understand the reason, and does that include the long-term loan given to states, like 1 lakh crore? Yes, it includes the 1 lakh capital expenditure loan given to states, because that is for that is exclusively for capital expenditure. The assistance given to states is for capital expenditure alone in the form of a 50-year interest-free loan. And again, let me clarify, it was mentioned in the speech, but it perhaps has not been noticed in some quarters. It is in addition to the 4% of GDP normal borrowing ceiling which states will be allowed. So that 4% remains, 3.5 unconditional, 0.5 tied to power reforms. This 1 lakh crore is over and above that 4%. So it is additional capital expenditure money to the states. It is part of the 7.5 lakh crore which has been provided for capital expenditure. You had another point, I'm sorry. NREGA. So NREGA is classified in the government accounting system as grant in aid for capital expenditure because it is expected that some assets are created, but it is because you seem to have some discomfort with that, and that is why we have footnoted it very transparently as to what amount of it is NREGA. So if you feel that NREGA is not a very productive expenditure, if that is your opinion, then we have allowed you to make your own calculations by giving those figures separately. So we have said provisions for also includes allocations under demand-related scheme, which would vary based on demand. So that has been indicated transparently. It is for you to draw your own conclusions. 110. मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज़ से। जो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सबसे ज़्यादा जॉब देता है। उम्मीद की जा रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से कि बहुत सारे रॉ मटेरियल जो खासतौर से इंपोर्ट होते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगी। एक दो चीज़ों में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी कट हुआ है और कुछ स्टील के स्क्रैप का आपने 1 साल और ड्यूटी कट को बढ़ाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम जैसी चीज़ें थी जो कि इंपोर्ट होती हैं और सस्ती पड़ती हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं हुआ। तो क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो उम्मीदें थी कि एक्सपोर्ट्स को लेकर जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो उनकी ख़त्म होती जा रही है, उसको लेकर सरकार ने इस बजट में क्या विचार किया था? मैं आइटम वाइज आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मगर ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू बी सपोर्टेड, एंड फॉर दैट पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जो आइटम हमारी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स है हमारे देश में उसका ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने कुछ भी टैक्स बढ़ाया नहीं, इंपोर्ट को अलग करते हुए। एक तरफा हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं
क्योंकि भारत में जिन जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रही है वो इंपोर्ट के नाते अलाउ करना सही नहीं है, मगर जिसका उत्पादन इधर नहीं है मगर वो रॉ मटेरियल है क्योंकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का वो आवश्यक है, फिर उसका इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। वो ब्रॉड प्रिंसिपल है। उसी ब्रॉड प्रिंसिपल को हम आइटम वाइज देखने के बाद ही बजट में प्रावधान कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बार जो मैं स्पीच में आइटम लिस्ट किया, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये नहीं समझना कि सिर्फ उन आइटम्स को दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं दे रहे हैं। पिछले बार जो दिया गया वो कंटिन्यू होती है इस बार। 120. Ma'am, I'm Nikunj Ori from Business Standard. Ma'am, there's been an allocation of 52,000 crore for Air India. Is this over and above what was sought in the supplementary demand for grants, which was 62,000 crore? And ma'am, there's been nominal GDP estimate has been 11.1. So could you please help us with what the inflation estimate is, because economic survey projects 8 to 8.5 as the real growth. And lastly, ma'am, pardon me for asking you a previous question. Last year, in the last year's budget, there was about 1 lakh crore which was expected from government's divestment in public shares in public sector banks and financial institutions. So that estimate has not been shared for this year as well as next year. So if you could please clarify. We've just had the discussion before coming here. Somnathan, on the 11 nominal GDP and other things. I'll come back to this. Okay. First, on your question of 52,000 crores, that was very much part of the supplementary estimates. In the supplementary estimates, there were two kinds of payments made to Air India. One kind related to the takeover of certain residual actual assets of Air India which have not been transferred. For example, their buildings, their land, they have some very valuable real estate and other assets. So those are part of the 62 something, they are not part of the 52. Those are actual capital assets which we retain. The remainder, which is actually capital in our accounting books, because it is an infusion of funds into Air India, but actually produces no value, is this element which has been separately quantified and transparently indicated to you. So the apparent capital expenditure in our numbers is 6.03, but we are telling you that 51 something of it is actually this. So it doesn't represent actual, multiplier creating capital expenditure in the economy. So that's the clarification on that. Your second point was on? 11%. See, we had a very difficult job of trying to estimate the nominal GDP. Remember, what the economic survey has given you is the real GDP growth, which they have estimated at 8 to 8.5%. The first difficulty we have is that the current year's GDP, which we have taken here from the Central Statistical Organization, which came on January the 7th, is essentially an estimate which is pre-Omicron in its construction. I mean, the inputs that went, because they are a statistical organization, they don't make guesses. They went with the trends they had on the date they made the estimation, and they did not have the Omicron trends with them. So it's possible that the base that we are working, we work on an incremental basis. We take this year's nominal, add a percentage for next year's nominal. So in adding to next year's nominal, first, there is a slight discount we have made for this year's base. And then we have assumed that real growth would be somewhere in the range that the economists have given us. Could be a little lower also because of this base effect. And then we are taking the deflator. Remember, here it is not the CPI which we use for the construction of our GDP number. And even in the current year, we have a 17.6% nominal growth with a real growth in the range of 9%. Since there's a very high deflator this year, there is a possibility that next year's deflator will have a base effect which will make it lower. So taking all these factors into account, we have come to a number which is effectively, which comes to 258 lakh crores as the nominal GDP estimate. Your third point? I think that has, we do not have, I don't think we have ever said that out of 175, 1 lakh is for banks. No, it was. No, that was the. It was an entry last time because a split was done. I think the split has been done away with because it really doesn't matter, where you bring this money from. I mean, money is fungible, so it comes from this or that.
Also, coming back to the question that came earlier from your neighbor on the, I think I have now understood better why she's saying what she said. So let me try to give you the answer. So if I'm understanding you correctly, but let me give you the last year's budget estimate for the fiscal deficit in absolute numbers was 15,06,000 crores. The projected budget estimate is now 16,61,000 crores. That is an increase of about 1.5 lakh crores in the amount of the fiscal deficit. If you look at the market borrowing estimates, they were 9,67,000 crores in last year's budget estimates. They have gone up by about 1.9 lakh crores in this year's budget estimates. So there is actually not much of an incongruity between the increase in the deficit and the increase in the market borrowing. What may be giving you this impression is that in this year's revised estimates, the market borrowings are lower than in the budget estimate because of an unexpected increase in small savings. So this year's small savings have been unexpectedly buoyant, perhaps because interest rates on deposits went down and these rates remained constant, but that could very easily reverse with the interest rate cycle reversing now. So we have remained, our small savings projections are based on last year's budget estimates, which were 391, they are now 425. So we have projected realistically what we expect as small savings in a normal growth without the unexpected increase that happened in the current year. So it's 1.9 growth in market borrowing against 1.5 lakh growth in the deficit. Very reasonable in my opinion. Number 10. Good evening, ma'am. Ma'am, Janani from Bloomberg Quint here. Ma'am, you had mentioned in the budget speech that the Special Economic Zone Act would be replaced by a new legislation. If I could ask, what would be the difference from the current SEZ Act and what is the intention behind the same, ma'am? What is the? The replacement for the SEZ Act, the legislation that will replace the SEZ Act was mentioned in the budget speech today. That's right. If I could ask, ma'am, what would be different from the SEZ Act that is, and what is the intention behind the same? Well, you will have to wait for the department to work out on the SEZ acts, and I've already mentioned broadly that it will help also for the states to be able to participate better in the SEZs. One of the broad objectives, but then the department is working on it and it will come through sooner. With your permission, ma'am, can we close now because you have to go for another appointment? Thank you very much, friends. Thank you very much, ma'am. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको, ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can.
बोलूं? Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बजट 2022 में। आइए अभी तक की सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं क्या है बजट से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट का किया स्वागत। बजट को बताया लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील। कहा जनता के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा बजट। अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 किया पेश। भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान। ये दर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक। उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 सेक्टर में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर खुराक के रूप में पेश किया जन बजट। पूंजीगत संपत्ति में 10.67 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी निवेश। प्रधानमंत्री ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम का 200 नए टीवी चैनलों के साथ होगा विस्तार। आरबीआई के डिजिटल रुपए को किया पेश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से शुरू होने वाली है शुरुआत। रिटर्न में गलती होने पर सुधार का मिला मौका। 2 साल के भीतर दाखिल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। बजट में सहकारी समितियों के लिए कॉर्पोरेट के समान न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर 15% करने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला भारी प्रोत्साहन। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 सेंटर की स्थापना होगी। दिव्यांग आश्रितों को कर में बड़ी राहत। उनके माता पिता या अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु होने पर भी बीमा योजनाओं से मिलेगी वार्षिकी और एक मुश्त राशि। कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस में योगदान पर कर कटौती को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव। सभी क्षेत्र के लोगों ने बजट का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को 100 साल की सबसे बड़ी आपदा के बीच विकास का नया विश्वास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया। 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट का महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो,
नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। पीएम मोदी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान और सुगम बनाने के लिए पर्वतमाला योजना भी शुरू की गई है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बजट के प्रावधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि कृषि लाभप्रद हो और एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 21वीं सदी के न्यू इंडिया को बनाने के लक्ष्य में जो तमाम चीजें करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस बजट 2022 का ऐलान किया गया है। इसी से जुड़ी अन्य खबरें भी आपके सामने लेके आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can.
Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है, प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है। हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है, प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है। हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है, इससे सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी और हमारे यहाँ यानी भारत में वही करेंसी मान्य होगी। A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2022-23 के लिए संसद में आम बजट पेश किया। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज के बजट पर उद्योग जगत और तमाम और अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञों के रिएक्शंस हम आप तक लाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है। हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये बजट विकास को गति प्रदान करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दृष्टिकोण से यह एक समावेशी है और देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक निवेश के जरिए देश अमृतकाल के लिए तैयार हो रहा है। ये पीएम गति शक्ति द्वारा निर्देशित होगा और मल्टी मॉडल दृष्टिकोण के तालमेल के जरिए देश के त्वरित विकास में मददगार सिद्ध होगा। A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से मौजूदा सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। This budget continues to provide impetus. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया और आइए इस समय सीधे रुख करते हैं अजय मिश्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की इस बजट को। प्रधानमंत्री ने पीपल फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। आपकी और आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स। लेकिन हमने देखा जब आप 2019 में जब आप आए तो आपने बही खाता बजट की शुरुआत की। फिर 2020 में आपने इतिहास का सबसे बड़ा लंबा बजट भाषण दिया, उसके लिए भी आपका नाम आया। 2021 में फिर आपने देश को दिया पहला पेपरलेस बजट। तो जब 2022 का बजट आप बना रही थी, आपके जहन में क्या था? इस बजट की आत्मा आपके लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो। देखिए, इस साल के बजट वो पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमी में जितनी भी घाटा हुआ उसको ठीक करने के लिए पिछले साल के बजट हमने प्लान की, जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ाया और इकोनॉमिक रिवाइवल के पक्का रास्ता पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब संपत्ति रोड हो, इनलैंड वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या सड़क हो, ये सब बनाने में आर्थिक सुधार का अच्छा रास्ता है। ये हमारा मान्यता था पिछले बजट में। मगर पिछले बजट प्रेजेंट करने के तुरंत बाद आया सेकेंड वेव, जो भयानक वेव था।